A very good afternoon to everyone. Mo Sushmita Mohanty स्वागत करुची हमर YouTube channel Ada 24/7 Odia को. Hello everyone. Hopefully समस्ते well and good and healthy थिबो. मो आशा करुची. So today's topic is direction and distance. आमे आज direction and distance topic ऊपर discussion करिबा. Okay, तार किछि MCQs discussion करिबा. And most importantly direction and distance रो शैडो क्वेश्चंस ऊपर फोकस करिगरी बेसी माने एठी गुरुत्व देछि बिकॉज़ एग्जाम जदी ओरिएंटेड आमे भाबिबा तबे शैडो ऊपर टिके अधिक क्वेश्चन मध्य आसे आमे जते बेले भी एग्जाम्स को जदी देखिबा तबे मोस्टली एग्जाम्स गुडा करे गोटे भी जदी क्वेश्चन आसीथिबो 1 मार्क क्वेश्चन भितर शैडो रो गोटे क्वेश्चन जेमिति हम आगे देई थाए तो बेसिकली हमर सेटा टिके अधिक फोकस थाए पर एवरी एग्जाम तो ऑब्वियसली आमे ता ऊपर फोकस करके मध्य क्वेश्चन डिस्कशन करिबा. So let's start the session with today's quote. Okay, but don't forget to share the link with your friends so that baki candidates be our video re join class re join. Okay, so this is the first this is the quote of the day. Every day is a change to be better. प्रत्येक दिन गोटे change आसे निजोकु आहुरी बेहतर करिबा पाई ना कि so that is actually true. आमन को प्रत्येक सकाळ जेतेबेले आसे सब दिन निजोकु निजे भी जदी रिजोल्यूशन नबा कि आमे गोटे बा किछि ना किछि बेटर करबा जोडा प्रीवियस हे जाईची ता थारु तेबे सेटा ऑब्वियसली आमन को निहाती बाबेरे गोटे बेटर पर्सन बनेबो डे बाय डे, राइट? Okay, so this was for your inspiration, that this was for you to be motivated. Okay, now let's discuss few things about the offer. तो 18% रो offer actually वर्तमान continue रही छी. तो जो candidates माने वर्तमान कोनोसी भी test series कोनोसी भी live courses को purchase करूछो, you will get the 18% off, but you need to use Y282. Okay, remember Y282 of को utilize करबा पड़िबो एवं ता सहित S यूज करबा को भूलिबनी to get the 18% off. Okay, and remember to purchase that live courses. First of all तो कहि दोपुची कि you need to go through the ada247.com. ada247.com को जाय करी ठीक अछि सेठी चेक करिनियो. ada247.com को जिवो एवं सेठी ऑल कोर्सेस ऊपर क्लिक करिवो. ओके, ऑल कोर्सेस ऊपर क्लिक करबा परे बेसिकली कोन करबो ना ऑल कोर्सेस ऊपर क्लिक करबो परे ओडिशा स्टेट एग्जाम जोन को सिलेक्ट करबो. ठीक अछि, ओडिशा स्टेट एग्जाम जोन को सिलेक्ट करबो. ओके, तापरे there will be 4 links: live courses, test series, e-books, books. Okay, whatever you require ता ऊपर क्लिक करिकरी परचेस करि परिबो. ओके, now this was for the details. जो भी candidates माने टिके भी डिस्टर्ब थांती सेमानंको पाई माने जानि न थांती सेमानंको पाई. ओके, so let's continue to discuss few concepts related to the chapter. Okay, concepts actually कौन पाई because look first of all the types of question कौन आसे सेटा discussion करिबा निहाती आवश्यक कि हमर direction distance रे basically तीनटा different type of question आसे. Okay, types of question. So types of question रे जदी हमें देखिबा तबे 3 types of question हमर basically आसीबो. गोटे simple form रे question आसे जोटी कि डाटा देथिबो जणे एत्ति की किलोमीटर ट्रैवल करूची तापरे लेफ्ट टर्न होची राइट टर्न होची एंड एट द एंड पचटिबो कि स्टार्टिंग पॉइंट टू डिस्टेंस बा डायरेक्शन केते. ओके, देन आ गोटे टाइप ऑफ क्वेश्चन रे बेसिकली कोन हमर शैडो टाइप ऑफ क्वेश्चन आसे एवं आ गोटे कोडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन मध्य आसीताय, राइट? तो we will discuss through the concept भी मु शैडो रो भी questions कहिबी. ठीक अछि, तो शैडो रो question actually आमे माने discussion करिबा वर्तमान through the example so that it would be better to understand with the question सहित बुझिबा पई टिके better हबो बुझिबारो. ओके, and another question आसे angle form रो मध्य. ओके, angle form रो भी गोटे question आसीता. ठीक अछि, so that is very rare आमे जदी देखिबा angle form रो भी question आसे. ओके, so these are the 3 different kind of questions asked in the direction and distance.
बट मोस्टली जदि जेमति कि मु कहली आमे शैडो फॉर्म ऊपर भी फोकस करके डिस्कशन करबा एवं ता सहित किछि अदर फॉर्म्स बा जनरल मिसलेनियस जेमति टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड आसे ओके ता ऊपर डिस्कशन करबा ओके सो लेट्स डिस्कस फ्यू MCQs related to direction distance जो तरीके हमें every type of questions को almost cover करबा पे चेष्टा करबा ओके so this is the first question of direction and distance look एडी कौन कहला ना जेमति कि मु कहली शैडो रो कांसेप्ट मु थ्रू द एग्जांपल कहबी सो दिस इज द क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि one evening A and B were talking to each other face to face if shadow of B was exactly to the right of B then which direction was A facing सबुठ प्रथमे मन रखिबो टाइम कोन देछि टाइम देछि इवनिंग so at the time of evening okay at the time of evening A and B were talking to each other प्रथमे जानो इवनिंग टाइम रे शैडो को पटे आसे जेहेतु इवनिंग टाइम रे सन रो डायरेक्शन थाए वेस्ट रे सो शैडो विल ऑलवेज बी एट ईस्ट डायरेक्शन ओके शैडो सदा बेले ईस्ट डायरेक्शन रे रहबो ठीक अछि देन रहिला कोन ना ए एंड बी निज निज भितरे कथा होचंती तेबे से कहिछि बी रो शैडोटा तारो राइट साइड रे पड़छि ता माने ईस्ट टा बी रो राइट साइड होबा दरकार जदि ईस्ट बी रो राइट साइड ता माने बी नॉर्थ को फेस करिछि ओके सो दैट ए ताकू फेस करके कथा होछि माने ए रो डायरेक्शन कोन हला साउथ तेनु आंसर हे गला साउथ से पचारतिला देन व्हिच डायरेक्शन ए इज फेसिंग तो ऑब्वियसली ए साउथ को फेस करिछि कारण ईस्ट बी रो राइट साइड तो बी रो राइट साइड ईस्ट सेति की बेले हबो जते बेले बी नॉर्थ को फेस करथिबो तो दि बी नॉर्थ को फेस करछि ए ताकू फेस करके कथा होछि ता माने ए साउथ को फेस करछि सो आंसर इज ऑप्शन बी साउथ देन नेक्स्ट क्वेश्चन take few minutes and answer it okay Okay, so now let's discuss the question. So it is saying one evening P and Q were talking to each other. Okay, if shadow of P was appearing to the right of Q, again देखो in the morning. एठी कौन है सेठी इवनिंग थिला तो शैडो इज एट ईस्ट डायरेक्शन काहे की ना इवनिंग टाइम रे जेहेतु सन वेस्ट रे थिबो तेनु शैडो ईस्ट रे पड़ुतरा किंतु मॉर्निंग टाइम कहिची ता माने मॉर्निंग टाइम रे सन कोठी थिबो ईस्ट रे ओके तेबे शैडो पड़िबो वेस्ट डायरेक्शन रे ओके तो शैडो पड़िला वेस्ट डायरेक्शन वर्तमान से कहूची पी आउ क्यू निज निज भितरे कथा होचंदी एवं पी रो शैडो क्यू रो राइट साइड रे पड़ुची मैटर करेनी शैडो कहार पड़ुची किंतु मैटर करे कहार राइट रे पड़ुची तो एठी कोन ना क्यू रो राइट रे पड़ुची जदी क्यू रो राइट रे पड़ुची ता माने वेस्ट टा क्यू रो राइट साइड हबा दरकार ताले क्यू फेस करिची कोठी की साउथ को तेनु क्यू रो राइट साइड वेस्ट हे परिबो तो पी ताकू फेस करी कथा होची माने पी रो फेस डायरेक्शन हे गला नॉर्थ ओके सो पी इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ क्लियर सो सेकंड नंबर क्वेश्चन आंसर इज फॉर नॉर्थ ऑप्शन ए then the next question number 3 here again it is saying one morning A and B were standing opposite to each other remember sete porjonto deithila ki standing and facing to each other ebong talking to each other okay so kintu ethi kon deichi na A and B standing opposite to each other okay
सो दी जण अपोजिट टू ईच अदर रहिबे ओके ठीक अछि तो प्रथमे मॉर्निंग नै जिबा ओके मॉर्निंग रे कोन करबा ना ए आउ बी अपोजिट फेस करिवे एवं सेमानकर शैडो कोन से कहिछि कि मॉर्निंग टाइम रे फर्स्ट ऑफ ऑल तो शैडो पडुथिबो वेस्ट रे ठीक अछि तो एटा मेंशन कर दबा कि मॉर्निंग टाइम तो शैडो पडुछि वेस्ट रे ओके एवं से कहला ए और बी स्टैंडिंग ऑपोजिट इच अदर माने ए गोटे डायरेक्शन को फेस करिवो बी गोटे डायरेक्शन को फेस करिवो ताले वर्तमान शैडो कहार लेफ्ट रे पडुछि ना ए रो लेफ्ट रे पडुछि तो ऑब्वियसली वेस्ट टा ए रो लेफ्ट साइड हबो ए रो लेफ्ट साइड केते बळे हबो ना ए जेते बळे नॉर्थ को फेस करछि सेते बळे ए रो लेफ्ट साइड रे शैडो पडिला ओके किंतु से पचरछि बी रो फेस डायरेक्शन कोन ए रो ऑपोजिट को बी फेस करछि त माने बी फेस करछि साउथ को ओके सो आंसर हे गला साउथ ऑप्शन डी क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सो क्वेश्चन नंबर 4 टिके भलो से पढो एठी देखो क्वेश्चन इज चेंज्ड नाउ जेमति कि मु कहली सिंपल फॉर्मेट थाए किंतु सेतेरे कोन डाटा देई थाए डाटा को हमकु अरेंज करिला बळिया नबा को पडिबो एंड देन स्टार्टिंग पॉइंट रु डायरेक्शन कोन ओके ए भली भाबरे क्वेश्चन देई थाए ओके सो take a few minutes try by yourself so look it is early in the morning because started walking he walked 15 meter right he walked 15 meter ठीक अछि तो को डायरेक्शन को जाई छी किछि मेंशन करा जाई छी नो ओके ठीक अछि डायरेक्शन मेंशन नाही ठीक वर्तमान से कोन कहला टर्न टू 15 मीटर देन टर्न टू द राइट ट्रैवल 20 मीटर ही अगेन टर्न टू हिज राइट ट्रैवल 15 मीटर नाउ he was in front of a garden where his shadow was falling exactly in front of him ताले हमें shadow थारु डायरेक्शन जानि परिबा ठीक ताले shadow रु डायरेक्शन जानि कला परे ही हमें कोन करि परिबा ना स्टार्टिंग पॉइंट रु तार डायरेक्शन कंसीडर करि परिबा सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमकु स्टार्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करबा पई एंड पॉइंट मिलिबो एंड पॉइंट कोठी ना जेते बेले से पहुंचची तार शैडो तार फ्रंट रे पडुची प्रथमे मॉर्निंग मु कोन कहली जस्ट हमें डिस्कशन करथिले मॉर्निंग टाइम रे शैडो पड़े वेस्ट रे ओके ताले वेस्ट रा तार फ्रंट हेइथबो ता माने से वेस्ट को ही फेस करछि सेट पे शैडो तार फ्रंट रे पडुची ओके सो से पहुंचछि जेते बेले वेस्ट को फेस करके पहुंचछि सेति पे शैडो तार फ्रंट रे पडुची ओके तो पहुंचबा पूर्व से केते डिस्टेंस कवर करथिला 15 मीटर ता माने एठी जदी से पहुंचछि ताठो हमें उल्टा ट्रैवल करेबा तेबे ही तार स्टार्टिंग पॉइंट मिली पारिबो सो से रिवर्स ट्रैवल करिला 15 मीटर ओके नाउ 15 मीटर रु कोन ता पूर्व से राइट टर्न करथिला तो हमें कोन कंसीडर करबा ना लेफ्ट टर्न ओके तो 15 मीटर रु लेफ्ट टर्न कंसीडर करिले ओके देन हमें कोन करबा ना लेफ्ट टर्न गला परे से ता पूर्व ट्रैवल करथिला 20 मीटर ताले ए डिस्टेंस ता हमें कंसीडर करबा 20 मीटर ओके नाउ ता पूर्व से को टर्न करथिला ना राइट टर्न ता हमें अगेन कंसीडर करबा लेफ्ट टर्न ओके देन डिस्टेंस केते थिला 15 मीटर दिस वाज द लास्ट डिस्टेंस ताले 15 मीटर एठी हे गला ताले एटा थिला तार स्टार्टिंग पॉइंट कारण या पूर्व ना तो कोनसी लेफ्ट नीची ना कोनसी राइट जाईची तो एठू ही से स्टार्ट करिकी सीधा 15 जाईतिला तापर राइट नेला 20 तापर पुणी राइट जाईतिला 15 ओके सो एग्जैक्टली से स्टार्ट करितिला टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन ओके ताले एंड स्टार्टिंग पॉइंट तार एटा दिला वर्तमान से स्टार्टिंग पॉइंट रो को डायरेक्शन रे अछि
साउथ डायरेक्शन रे ताले ए क्वेश्चन आंसर हेजिबो साउथ कारण एटा तार स्टार्टिंग पॉइंट एटा तार एंड पॉइंट हमको एंड पॉइंट मिलितिला स्टार्टिंग पॉइंट बाहर करिले क्वेश्चन पचाइतला व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट ताले स्टार्टिंग पॉइंट रो से साउथ डायरेक्शन रे अछि तेनु आंसर हे गला ऑप्शन बी ओके तापर देखो सेम 4 नंबर 5 नंबर गोटे ही डाटा रू क्वेश्चन पचाइबो तेनु 5 नंबर पचाइला फ्रॉम व्हिच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी ताले से ईस्ट डायरेक्शन रू तार जर्नी को स्टार्टेड जर्नी स्टार्ट कर दिला राइट ईस्ट डायरेक्शन को ही तार जर्नी स्टार्ट कर दिला सो ही स्टार्टेड हिज जर्नी टुवर्ड्स ईस्ट ओके so answer would be east then next So in this question it is saying a boy starts from home in the early morning and walks straight for 8 meter then he takes a right turn walk for 3 meter then he turns right again and walks for 2 meter and then he turns left and walks for 1 meter again he turns right and walk for 1 meter look up to this point then he turn right and travel 4 meter किंतु एठी स्टार्टिंग रु तार डायरेक्शन देला नाही ओके तेबे से नेक्स्ट कोन कहला so when he reached his destination the time was 12:15 noon okay then how far is he from the starting point तामाने मत्ते गोटे जिंस देखो से पचाची how far तामाने हमको डिस्टेंस दरकार not the direction and आमे जानि छ कोन obviously 12 noon रु तो कोनोसी प्रकार डायरेक्शन डिटरमाइन करबोनी एवं बाकी हमर जदी अर्ली मॉर्निंग भी कहूचे शैडो विषय किछि देइनी so direction is doesn't need here in this question we just need the distance right so you can consider from any direction okay so start from any direction so let's start from the north okay towards the north तो exactly first से कौन कहला straight जाइची 8 मीटर तो हमें कौन करबा starting point to straight north to 8 मीटर consider करनबा okay 8 किलोमीटर then से कहला takes a right turn consider करबा केते ना 3 किलोमीटर okay 3 किलोमीटर consider करनबा then पूरी तरह right turn and walks for 2 किलोमीटर एटू right turn नेला okay walk करला केते 2 किलोमीटर ठीक अछि and then he turns left and walk for 1 किलोमीटर okay वर्तमान से कोन एठू लेफ्ट टर्न माने ईस्ट को जिवो एवं जिवो केते 1 किलोमीटर ओके पुणी राइट टर्न 1 किलोमीटर रु राइट टर्न माने साउथ को पुणी 1 किलोमीटर ओके देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड 4 किलोमीटर स्ट्रेट देखो ए टू एति के 3 ए टू एति के केते 1 ताले टोटल टा केते 4 एठू जदी से राइट टर्न नउची माने वेस्ट को जिवो 4 त माने ऑब्वियसली ए डिस्टेंस से कवर करिला तो एई पॉइंट ऊपर ही आसी के पहुंचला 4 किलोमीटर जतोळे राइट टर्न नउची तो वर्तमान से पचरची कि स्टार्टिंग पॉइंट रु डिस्टेंस ताले एटा तार स्टार्टिंग पॉइंट थिला एटा तार एंड पॉइंट एठू एतिकी केते 2 1 3 ताले टोटल 8 रु जदी 3 हमें माइनस कर दबा बळिबो केते 5 ता माने स्टार्टिंग पॉइंट रु से 5 किलोमीटर डिस्टेंस रे अछि ओके सो द आंसर इज 5 किलोमीटर ऑप्शन सी ओके देन द नेक्स्ट क्वेश्चन so here it is one of the question of again related to the shadow form right so let's discuss it kon koila
One morning, Uday and Vishal were talking to each other face to face at a crossing. Okay, if Vishal's shadow was exactly to the left of Uday, which direction was Uday facing? So obviously, जदि गोटे morning time माने obviously कोटी पड़ुची shadow. Morning time means the shadow is in west direction. Okay, so shadow is in west direction and it is saying कि उदय रो लेफ्ट रे शैडो पड़ुची तो वेस्ट टा उदय रो लेफ्ट हवा दरकार ता माने उदय इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. ओके, they were talking to each other means obviously Vishal is facing towards Uday, that means Vishal is facing south, but it is asking which direction Uday is facing. So Uday is facing north, so answer is simple, option C, north. Okay, question number 8. Look, question number 8 is the simplest form of question. Okay, so eti kon koila now y is in the east of x, x ro east re y achi, which is in the north of z. ता माने x is in the north of z, ताले x z रो north रे अछि. तापरे कहला जदि p z रो south रे रहिबो तेबे y p रो को डायरेक्शन रे रहइबो. ओके, सॉरी y रो p को डायरेक्शन रे रहइबो, then y रो p को डायरेक्शन रे रहइबो. जदि z थारु south रे p अछि तेबे y रो एटा को डायरेक्शन ना southwest. So answer is southwest माने none of this, because option is nahi, so answer would be southwest. Y ro p southwest direction रे अछि, so none of this. Okay, then before we go to the next question, let me inform that we are going to start 2 batches, like 24th ru amara abhipsa batch again start hochi. Okay, it's a new complete new fresh batch for the ASO. ओके, जो भी कैंडिडेट्स माने सेक्रेटेरिएट एएसओ बैच में प्रिपरेशन करूचंती से माने होपफुली जल्दी ही जॉइन करिनियो. ठीक अछि, बिकॉज़ टाइम टू टाइम कोन कि प्राइस इंक्रीज हेता है, लाइक फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स प्राइस इज फिक्स एंड देन नेक्स्ट प्राइस विल बी हाइक एंड देन नेक्स्ट प्राइस विल बी हाइक. तो 100 प्लस हेले हाइक हेजो, पुनी 200 प्लस हेले हाइक हेजो. तो एटा होची जनरल स्ट्रक्चर अछि, प्राइस स्ट्रक्चर तो इंक्रीज होबो ही. ठीक अछि, तो जो भी कैंडिडेट्स माने इंटरेस्टेड अछंती बेटर होबो, बिकॉज़ you have only 2 days left, so you can join it as soon as possible. And also 27th रे आमे माने OS रो बैच मध्य स्टार्ट करूछु. जो भी कैंडिडेट्स माने OS पई मध्य प्रिपरेशन अछो माने प्रिपरेशन करूछु इंटरेस्टेड अछो तेबे से माने मध्य जॉइन करि परिबे. ठीक अछि, जॉइन करबा पई रिमेंबर डोंट फॉरगेट टू यूज y282 as your code to get the maximum discount. एवं बिल्कुल भी भूलिबनी ऐप थ्रू रु जॉइन करबा पई, बिकॉज़ ऐप रे coins रा availability रहिबो, तबे coins एवं faculty code use करले you will get more discount. Okay, now let's continue the next question. So the next question is, Rahul put his timepiece on the table in such a way that at 6 p.m. hour hand points to north. Remember, जदि timepiece रो hour hand 6 टा बेले 6 टा माने hour hand रहिला 6 पाखरे, minute hand रहिला 12 पाखरे. वर्तमान से कहि आवर हैंड टा नॉर्थ डायरेक्शन अछि, ता माने 12 हे गेला साउथ, ताले ईस्ट कोटा हबो ऑब्वियसली 9 पाखटा हबो ईस्ट आ 3 पाखटा हबो वेस्ट. ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एटा ही गेला. ठीक अछि, तो एग्जैक्टली वर्तमान से कहि छि कोन ना जेते बेले 3टा 45 हबो सेते बेले मिनिट हैंड को डायरेक्शन ताले फेस करबो. 3टा 45 माने मिनिट हैंड रहबो कोठी 9 पाखरे, 45 मिनिट माने मिनिट हैंड रहबो 9 पाखरे, ताले 9 टा हमर को डायरेक्शन ला ईस्ट डायरेक्शन, सो द मिनिट हैंड विल बी इन ईस्ट डायरेक्शन. सो द आंसर इज ऑप्शन डी, ईस्ट. राइट ऑल ऑफ यू. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Now in question number 10, the length and breadth of a room are 8 meter and 6 meter respectively. Okay, a cat runs along all the 4 walls. Okay, and finally along a diagonal order. First of all आमे कोन करबा ना चारिटा wall रो जदि length breadth हिसाब रे आमे consider करछे, so 8 and 6 meter, length is 8 and breadth is 6 and 6, so let's consider it like empty. Then diagonal बीच से travel करिला, तो diagonal रो distance केते हबो
6 स्क्वायर बिकॉज इटा राइट एंगल हे गला वर्तमान तो डायगोनल डिस्टेंस केमती कैलकुलेट करबा ना 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर रूट ओवर राइट so that is equals to 36 plus 64 that is equals to 100 that is equals to 10 right so this value is 10 okay so से कौन कहला टोटल केते डिस्टेंस कवर करिछि रिमेंबर पाइथागोरस थ्योरम हिसाब रे जदी हमें देखिबा सेही हिसाब रे मु राइट एंगल रो फार्मूला पुट कर देली ओके राइट एंगल रो फार्मूला पुट करिकि डायगोनल डिस्टेंस एटी कैलकुलेट करिनेली सो द डायगोनल डिस्टेंस इज 10 मीटर वर्तमान से कौन कहिछि ना सो से वर्तमान क्वेश्चन करिछि कि टोटल केते कैटर डिस्टेंस कवर करछि तो टोटल ही गला केते 8 plus 8 is 16 then 6 plus 6 is 12 okay and then 10 distance okay the total is equals to 38 right so the answer is 38 meter okay so 38 meter would be the answer clear all of you it's very simple से कौन कहिछि रूम रो ही टोटल लेंथ एंड ब्रेथ रो डिस्टेंस हे देला हमको डायगोनल डिस्टेंस मिली जिबा राइट एंगल फार्मूला पुट कर देले सो एग्जैक्टली हमको टोटल डिस्टेंस भी मिली गला सबुतक ऐड कर दबा सबुतक ऐड कर देले तो पहले 38 मीटर so answer is 38 meter now the next question so it is 11 and 12 are from the same data okay just take a few minutes and try by yourself then I will explain it okay take a few minutes So let's discuss this question now. So this is saying Dev, Kumar, Nilesh, Ankur and Pintu are standing facing to the north in a playground such as given below. Okay. So it is saying Kumar is 40 meter to the right of Ankur. ସମସ୍ତେ north करचंदी तामाने अंकुर रो right side obviously east होबो ठीक अछि तो अंकुर रो east रे छिडा हिची कुमार ओके केते ना 40 मीटर ठीक देन से कहला देव इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ कुमार कुमार रो साउथ रे किए ना देव छिडा हिची केते 60 मीटर ओके देन से कहला निलेश इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इन द वेस्ट ऑफ अंकुर अंकुर रो वेस्ट रे वर्तमान के छिडा हिची निलेश एवं केते डिस्टेंस 25 ओके तापर कहला पिंटू इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ देव रो 90 मीटर नॉर्थ ओके ताले एटा जदी 60 आउ 30 मीटर नॉर्थ रे के रहइबो ना पिंटू रहइबो ओके so look एठी कोन कहला now which one is the northeast of the person who is to the left of kumar कुमार लेफ्ट रे अंकुर भी अछि कुमार लेफ्ट रे निलेश भी अछि किंतु नॉर्थ ईस्ट पर्सन टा किए नॉर्थ ईस्ट पर्सन होछि पिंटू राइट कारण अंकुर रो भी ये नॉर्थ ईस्ट हबो निलेश थारु भी नॉर्थ ईस्ट ही हबो ओके तेणु एठी आंसर आसीबो कोन ना ऑप्शन डी पिंटू ओके then 12b a data को नेकी so what is the question if a boy starting from nilesh made to ankur then kumar and after this dev then to pintu देखो starting करला nilesh ठू तापरे गला अंकुर पाखु को तापरे गला कुमार पाखु को तापरे जीवो dev and then pintu ता माने हमें कोन करबा 25 plus 40 plus 60 plus 30 sorry not 30 90 कारण देव ठारू पुणी एठी की जीवो ना तो 90 ऐड करबा सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इट इज दिस वन इज 65 60 125 plus 90 is 215 right so the answer is 215 कारण 25
देन आमे 40 सॉरी 25 थिला 25 40 प्लस हमर नेक्स्ट डिस्टेंस थिला 60 60 टू पुनी 90 जीवो तो 90 एतक आमे ऐड कर देले तो टोटल हमर बाहरिबो केते 300 सॉरी 215 तो आंसर आइबो 215 ऑप्शन ए ओके सो क्वेश्चन नंबर 12 रो आंसर हे गला ए नेक्स्ट So it is another type of question जोठी की कौन कोई जी ना it is saying 6 flats और 6 flats on a floor गोटे फ्लोर रो 6टा फ्लैट किंतु दीटा रो रे अरेंज होबो ओके गोटे रो रो नॉर्थ एवं माने रो 1 रे सपोज नॉर्थ एवं रो 2 रे साउथ रहबे अलॉटेड ओके तो एमटी हमको अरेंज करियो कहला ठीक अछि देन देखिबा 6टा फ्लैट नबा ठीक किंतु दीटा रो रे हमें अरेंज करबा तो फर्स्ट डाटा कहला q gets a north facing flat and s is next to s ठीक अछि से कोन कहला q हां q gets a north facing flat त माने north facing flat भितरे की रहइबो ना q रहइबो ठीक अछि q जदि north facing flat रे रहइबो एवं s तार पाखे रहइबो तो हमें केवल एटा लिखि दबा q नॉर्थ फेसिंग s तार पाखे ओके देन से कहला s एंड u डायगोनली ईच अदर त माने s भी नॉर्थ फेसिंग रहइबो तले s को एठी नै जाउची नॉर्थ रे तार डायगोनल रे की रहइबो ना u ओके तापर से कोन कहला एठी q रहइबो ता पाखे s पाखे कारण s एंड q पाखा पाखी सो डाटा इंप्लीमेंट हे गला q नॉर्थ माने s ता पाखे रे तले s मध्य नॉर्थ ओके s और u डायगोनली माने ये गोटे कॉर्नर से गोटे कॉर्नर डायगोनल ले गले तापर से कहै छी कि r नेक्स्ट टू u पाखे रे के बसिबो ना r बसिबो ओके तापर से कोन कहला कि गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट एंड t गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट त माने आ गोटे फ्लैट रहला के t हे गला नॉर्थ फेसिंग ओके तापर बढुची गोटी कोटा r त माने सॉरी p त माने p रहइबो एटी एवं से रहइबो कोन साउथ फेसिंग ओके तो वर्तमान देखो से कहछि इफ द फ्लैट ऑफ p एंड t आर इंटरचेंज जदि p और t इंटरचेंज हे जाउछंती ठीक अछि तेबे whose flat will be next to u तले कहारो फ्लैट p एंड t इंटरचेंज हे गले तो मैटर करेनी ना u रो पाखरे तो कंपलसरी r ही रहइबो कारण जदि u गोटे एंड रे रहइबो तेबे आ गोटे एंड रे जेंकि p अछि तो u रो नेक्स्ट होची r कंपलसरी ओके so that the answer would be r okay so option c is the answer then next what it is asking it is saying which of the following combination get south facing flat हमरो को तीनटा जक पाइले u r p okay so south facing flat okay 6 flats on a floor 2 rows facing north and south are allotted to a p q r s t and u q gets a north facing flat okay ठीक अछि तो वर्तमान एठी हमर आंसर एक्चुअली कोन हिजबो कि हमें कहि परिबा लाइक p साउथ फेसिंग हे पारे p नॉर्थ फेसिंग हे पारे कारण एठी गोटे जिंस मु कंसीडर करिनथली कोन ना कि 6 फ्लैट्स कहि छी गोटे फ्लोर रे दीटा रो फेसिंग नॉर्थ आउ साउथ किंतु कहिनी को रो रे केतेटा फ्लैट अछि राइट तो एठी मध्य अकॉर्डिंग टू द डाटा हमें कंफर्म होचे s q t तीनटा जक नॉर्थ हेबे u एंड r दीटा जक साउथ हेबे कारण u पाखे रे r बसिची हेले p रो हमें जानि परिबानी ओके सो एग्जैक्टली p कोन हबो ना p हमरो नॉर्थ भी हे पारे p साउथ भी हे पारे तेनु ए जो डाटाटा कोन हबो आंसर this would be data inadequate yes this would be data inadequate because look u and p are both are south facing it is confirmed and according to the data euro neighbor jodi पचाउची तबे confirm euro neighbor होची हमें पाइजबा ठीक अछि confirm एटी s रहइला एटी s पाखरे q रहइला t भी नॉर्थ त t भी नॉर्थ रे रहइला किंतु
P पाई डाटा हेई पारे साउथ रे थाई पारे हेई पारे एपड़े नॉर्थ रे भी थाई पारे वी आर नॉट कंफर्म राइट तो सेति पई आमे कोन करबा ना डाटा inadequate ही नंबर ओके क्वेश्चन नंबर 14 would be data inadequate then next कोन कहला the flat of which of the other pair than SU is diagonally opposite to each other look according to this question data is adequate okay that means according to this question jehetu data inadequate option hi nahi so it is confirmed हमको एटा ही नबो पड़िबो दैट ओके लेट मी रेक्टिफाई द क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन है दैट मींस टिके मिस्टेक अछि पिले मैं एटी कहि दोउची क्वेश्चन टाको हमें टिके चेंज करबा बिकॉज़ एम्ति एक्चुअली क्वेश्चन रे जदी हमें रेक्टिफाई करबा सेठी कोन कहबा कथा ना 6 फ्लैट्स ऑन अ फ्लैट इन 2 rows facing north in 2 rows 3 are facing north and 3 other 3 are facing south okay तो एटा एक्चुअली तार डाटा थिबा दरकार बिकॉज़ एभली डाटा न रहिले कंफर्म की क्वेश्चन नंबर 14 एक्चुअली डाटा इनएडिक्वेट हबो एवं क्वेश्चन नंबर 15 रे किंतु डाटा एडिक्वेट नाही तो हमर जदी एस क्यू टी को हमें एभली रखी देले बिकॉज़ इट इज कंफर्म की एस और यू डायगोनल किंतु टी सहित डायगोनल रहिबो की आर भी हेई पारे टी सहित पी भी हेई पारे तो एठी कोन ऑब्वियसली टी आर देखो कॉम्बिनेशन ही नाही अछि कोन टीपी रो कॉम्बिनेशन ता माने टी पी आर डायगोनल टू ईच अदर राइट तो एठी कंफर्म डाटा कोन हे जाउची ऑप्शन ए इज द कंफर्म डाटा ओके सो हमें डाटा स्टार्टिंग रु टिके रेक्टिफाई कर दोउची एंड सेटा तो माने करेक्शन करिवो क्वेश्चन रे करेक्शन करिवो क्वेश्चन रे कोन ना तीन जण साउथ तीन जण नॉर्थ तेबे क्वेश्चन नंबर 13 रो आंसर आर पूरा परफेक्ट अछि अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट कोन रहइबो ना एटा ही अरेंजमेंट रहइबो यू आर एंड एठी रहइबो पी ओके एवं एठी रहइबो एस नॉर्थ एस आउ यू डायगोनल ले गले क्यू ता पाखरे आउ टी भी नॉर्थ ओके सो टी एंड पी डायगोनल रहि जंती देन एठी कहला साउथ फेसिंग कॉम्बिनेशन ऑप्शन सी हेजबो यू आर पी आर साउथ फेसिंग ओके ऑप्शन सी इज द आंसर ओके and then the next answer हेजबो T and P are diagonal to each other तो एठी टिके ना को रेक्टिफाई करनबो क्वेश्चन को टिके मिस्टेक अछि सेमति टाइपिंग मिस्टेक एक्चुअली अदरवाइज एमति तो हबा कथा नै ना कि गोटे क्वेश्चन रे एबडे आंसर आ गोटे क्वेश्चन रे अदर आंसर सो एमति हबोनी सो इट इज एटा एक्चुअली हबो तीनटा प्रत्येक रो रे तीन जण रहबे तीनटा फ्लैट रहबे ओके So this much is for today. Let me inform you that test series is the test series is सब test series वर्तमान live अच्छी ASO पाइन test series live अच्छी civil service रो preliminary examination ताकि तो OSSSC combined recruitment examination एवं बहुत सारे test series वर्तमान भी live अच्छी जो भी candidates माने जहाँ भी test series purchase करने पाइन interested अच्छो प्रथमे ada247.com को जाइकरी search करो जहाँ requirement अच्छी ताको भलो भाबरे check करो तारो प्राइस स्ट्रक्चर चेक करो एवं ता परे ही परचेस करो किंतु परचेस करिवो ऐप थ्रू रे परचेस करिला बेले Y2H2 प्रोमो कोड जगह रे यूज करिनबो माय फैकल्टी कोड एंड आल्सो यूज द कॉइन्स ताले अधिक डिस्काउंट मिलि जिवो ओके मींस मोर देन 18% रो ऑफर मिलि जिवो विथ द फैकल्टी कोड ठीक सो डोंट फॉरगेट टू यूज द फैकल्टी कोड एंड आल्सो द कॉइन्स ओके सेति पई ऐप थ्रू रो जिबा निहाती भाबरे आवश्यक ओके एंड ऐप डाउनलोड करिवार आपुरी भी बेनिफिट मु कहि दोची जदी तमे कोनोसी टेस्ट सीरीज बा लाइव कोर्सेस वर्तमान परचेस करिवा पई इंटरेस्टेड ना हो फिर भी ऐप डाउनलोड करिनियो बिकॉज़ वर्तमान एसो रो फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हे पारुची OSSC रो फ्री मॉक टेस्ट ट्रायल बेसिस रे ट्राई करि परिबो एवं देन कोन करि परिबो ना करंट अफेयर्स अप टू डेट पाई परिबो ता सहित फ्री क्विज गुडा को अटेम्प्ट करि परिबो सो दिस ऑल फैसिलिटीज बा बेनिफिट्स यू विल गेट फ्रॉम द ऐप ठीक अछि तो जदी किछि परचेस भी करबार नाही तेबे मने ऐप डाउनलोड करिनियो एवं करंट अफेयर्स अपडेटेड हो एवं फ्री मॉक दबा को ट्राई करो जेति की भी फ्री मॉक अवेलेबल होची फॉर द एएसओ एवं ता सहित OSSC कंबाइंड पाई मध्ये अवेलेबल हो ठीक अछि जहा भी दबा पे इंटरेस्टेड अछो फ्री मॉक गुडा को दियो तो तमरो प्रैक्टिस को स्ट्रांग करो ओके मेक स्ट्रांगर योर प्रैक्टिस लेवल एंड मेक योर नॉलेज एनहांस ओके थैंक यू सो मच एवरीवन टिल नाउ मो से तो कनेक्टेड हेतिबारु थैंक यू एवरीवन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आल्सो टेक केयर ऑफ योर फैमिली Thank you all.